All right. So good morning, dear students. Today here we are again with another important and very interesting concept called self-image, which is a part of your new value-added course. So I'll just share my screen. Okay. अब कल तो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस. आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेल्फ इमेज, है ना? तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ इमेज refers to an individual's perception and beliefs about themselves. परसेप्शन कि हमारा खुद के बारे में हमारे क्या विचार हैं, है ना? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम. अब सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एस्टीम क्या है, दिस वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर. Then it includes one's view of their abilities, personality, appearance and social roles. हमारी क्या क्या क्षमताएं हैं, हमारी एबिलिटीज, हमारी पर्सनालिटी हम इंट्रोवर्ट समझते हैं अपने आप को, एक्सट्रोवर्ट समझते हैं, है ना? देन आर अपीयरेंस, वेदर वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर अपीयरेंस, है ना? कभी कभी कुछ लोग दे आर वेरी शाय, दे आर वेरी हेजिटेंट, है ना? दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स. देन अबाउट आवर सोशल रोल्स, कि हम अपने आप को इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर सोशली, हम कैसे अपने आप को ये सोचते हैं. देन कमिंग टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्फ इमेज. नाउ हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट आर अ पार्ट ऑफ द सेल्फ इमेज. तो अब हम समझेंगे कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है एंड सेल्फ एस्टीम क्या है. Coming to the first point, self concept. Now, it is the foundation of self image and if it reflects how one sees themselves in various domains. Various domains, as in how you see yourself in terms of your maybe family relations. आप अपने आप को एज अ फ्रेंड कैसे देखते हैं, है ना? इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, हाउ यू सी योर सेल्फ, दैट हाउ मच केपेबल आई एम, मैं कितना सक्षम हूँ, या मैं कितनी सक्षम हूँ इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ, हाउ वेल आई एम इन माई फैमिली रोल्स. ठीक है, तो अलग अलग ये जो डोमेन्स हैं, दिस कम्स अंडर द सेल्फ कॉन्सेप्ट. Now you can see the example here. Seeing oneself as a compassionate friend. अगर हम आपसे पूछें तो आप हो सकता है कहोगे कि आई एम अ वेरी compassionate friend. हो सकता है दूसरा कहे आई एम अ वेरी helpful friend. राइट? तो ये सबके अलग अलग सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन से दैट आई एम अ स्किल्ड आर्टिस्ट. अब वही यही पॉइंट किसी और का हो सकता है कहेगा दैट यू नो आई एम नॉट वेरी गुड एट आर्ट, सो आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट बट आई एम अ गुड पोएट. Right, so you can see that how self concept, it entails all your different aspects or your different domains in life. Then coming to the second point, that is self esteem. अब भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम इज द इमोशनल इवैल्यूएशन ऑफ वंस सेल्फ कॉन्सेप्ट. अब सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारे अलग अलग डोमेन्स का हमने एक आइडिया लगा लिया कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. सेल्फ एस्टीम क्या है, हम उसको कैसे उसका आंकलन करते हैं, हाउ वी इवैल्यूएट दैट, कि हम उसको अपनी हाई सेल्फ एस्टीम रखते हैं या लो सेल्फ एस्टीम, वेदर आई एम अ गुड compassionate friend or I'm not a very compassionate friend. So you can see that it shows a parameter कि कितने आप अच्छे हो in that particular domain. Alright, so self-esteem tells you whether you are high in a particular domain or low. So here you can see that high self-esteem leads to confidence in one's abilities and a strong belief in overcoming challenges. Now see, this is something very natural. आपकी अगर high self-esteem होगी तो naturally आपकी life में कोई भी challenges आएंगे, so you would be able to overcome it efficiently. हमने कल challenges की बात कही थी ना, चैलेंजेस हमने पढ़ा था कि चैलेंजेस आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ. सी अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम अपने जीवन में जो हमको जो भी चीज़ अवेलेबल है, हमको जो भी चीज़ मिली है, हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे. इफ समथिंग इज गिवन इट टू यू फॉर फ्री, यू वोंट वैल्यू इट,
है ना, वही आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आपको थोड़े से चैलेंजेस उठाने पड़ेंगे, देन आपको उसकी असली कदर होती है. Alright, so here we come, we understand the meaning of self-image. अब हम दूसरा स्लाइड. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इट टॉक्स अबाउट द 6 dimensions of a person's self-image and it was given by Oldman in 2014. ठीक है, सेल्फ इमेज हमने समझा क्या है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम. अब इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस की ये क्या क्या एरियाज को कवर करता है आपके. Alright, so we will look at all these 6 dimensions one by one. तो पहला है आपका physical dimension. Okay, now physical dimension naturally it is related to your outward appearance about your body. So how a person evaluates his or her appearance. है ना, जब सेल्फ इमेज की बात करते हैं, यूजुअली द इमेज एज इन हमारी, हम अपने आप को मिरर में कैसे देखते हैं, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज समथिंग लाइक दैट, राइट. तो इसका फर्स्ट जो डोमेन है, इट टॉक्स अबाउट द फिजिकल डायमेंशन, कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर अपीयरेंस, whether we are confident about our appearance or whether we are not confident about our appearance. Then second point is psychological dimension, how a person evaluates his or her personality. है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. अब हो सकता है कोई कहे कि नो, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. So, you know, personality talks about how extrovert you are, whether you are an introvert or an ambivert. Ambivert is a mixture of both the sides. And now, extrovert bhi ho, introvert bhi ho. Right? Then the third dimension talks about intellectual dimension. Now, intellectual dimension talks about how much you evaluate yourself in terms of your intelligence. है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम अपने आप को कितना सोचते हैं, कि हमारी कितनी IQ लेवल है. Alright. Then the fourth point talks about skills dimension, कि हम कितने पोटेंशियल हैं. Alright, कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितने स्किल्ड हैं, अपने टेक्निकल स्किल्स हमारे में कितने हैं. राइट, लाइक यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड कि हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना कि भाई हमसे ये टेक्निकल स्किल्स हमारे इतने अच्छे नहीं है, सो प्लीज हेल्प मी. एंड आप लोग अपने घर पे कई दफा अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होगे, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते होगे. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्किल्ड इन द टेक्निकल एरिया, है ना. तो that shows, the skills dimension shows that how much you are potential, what is your opinion about your skills in terms of the technical field. या social skills आपके कितने, social skills as in how much efficient you are in communication, है ना. कम्युनिकेशन में क्या वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है ना, कि हम कितने एफिशिएंट अपने आप को मानते हैं, कि हाउ गुड एम आई अ स्पीकर. और ये बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि आप ये सब जो भी पढ़ रहे हो, इट इज इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सपेक्टिव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इमेज, है ना, कि हम क्या अपने बारे में सोचते हैं इन सारे डायमेंशंस के विषय में. Alright, then the fifth point talks about moral dimension. Now moral dimension, obvious सी बात है, दिमाग में क्या आएगा, हमारे moral values, कि हम अपने आप को कितना समझते हैं, that I am a very moral valued person, है ना. Then the sixth point talks about the sexual dimension. That is, you know, in the society हम लोग के there are a particular gender norms related to males and females. Like for example, females के लिए usually like there's this notion na, ki that females like they're very delicate, you know, and they are little reserved at times, you know, ऐसे. And जैसे कि अगर मान लो heavy lifting करनी है, you know, objects उठाने ऐसे, बाहर का काम करना है, so that, you know, that role is generally assigned to the males. So how much you consider yourself to be very feminine, or how much you consider to be very masculine. Like for example, some girls, है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं, like they are very tomboyish, right? They say कि no, I don't, you know, consider myself as to be very feminine. Like I am a very tomboy, मुझे life enjoy करनी है, right? So that is how you see yourself in terms of your
sexual dimension, that whether you are considering yourself as very, as a typical particular female, or little tomboyish or something like that. Then coming to the importance of सेल्फ इमेज. अब सेल्फ इमेज हमने पढ़ा क्या है ना. अब समझते हैं कि ये क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है. Why is it important? So the first point talks about mental well-being. Mental well-being, that how much you are mentally satisfied, mentally happy, right? A healthy self-image is linked to better mental health, reduced stress, and a greater emotional resilience. Now see, this is something very obvious. आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपने अपीयरेंस के बारे, अपने सेल्फ इमेज के बारे में, तो नेचुरली यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट ना. आप कहीं बाहर जाओगे, यू विल बी ऑल द टाइम थिंकिंग कि आई जस्ट होप पीपल आर नॉट लाफिंग एट मी, दे आर नॉट मॉकिंग एट माई अपीयरेंस, है ना. तो कई लोग होते हैं हु आर वेरी कॉशियस अबाउट दे अपीयरेंस, तो उनको ये सेल्फ इमेज इश्यूज हो जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप अपने अंदर सेल्फ इमेज की क्वालिटी डेवलप करेंगे, सो इट विल कीप यू मेंटली हैप्पी. Alright, then the second point talks about motivation and success. Now, अब naturally आप अगर self image आपकी अच्छी होगी, तो you will succeed in life. You will always stay motivated. Right? Individuals with a positive self-image are often more motivated and achieve their goals and they have a greater determination. Now see, this is something very obvious. आपकी अगर self-image आपकी positive है, like you have a high self-esteem and a good self-concept about yourself. See, because self-concept and self-esteem are a part of your self-image, right? तो अगर ये आपके positive हैं, they are high, तो naturally you'll always stay motivated. वरना आप क्या होगे, आप हमेशा demotivated अपने आप को feel करोगे, है ना. You will hesitate to initiate things in life. All right, and that will naturally and gradually it would hamper your success. Success में आपके बहुत problems आएंगे, challenges आएंगे, because you don't have a positive self image of yourself. Coming to the third point, which talks about interpersonal relationships. It says a positive self image enhances the ability to form and maintain positive relationships, fostering self-acceptance and self-worth. Now see, yesterday we talked about self-acceptance, right? And self-respect. कि आप अपने आप को अगर आप अपना respect करते हैं, if you accept your strengths and weaknesses, then even the other people will respect you. And if you don't respect yourself, then you cannot expect the world that they will respect you. Right? So, a healthy self-image is important for good interpersonal relationships. Right? कि आप अपने बारे में अगर एक positive self-image रखोगे, so naturally people will also do the vice versa. They'll have a positive self-image of yourself in their minds. आप अपने आप को नेगेटिवली पोर्ट्रे करोगे, एज अ फेलियर पोर्ट्रे करोगे वर्ल्ड में, तो नेचुरली दे विल आल्सो एट सम पॉइंट दे विल थिंक दैट यू आर अ वर्थलेस पर्सन. All right, so always remember that you have to have a positive outlook towards yourself. Accept yourself. ठीक है, हमारे में कमियां हैं, अगर strengths हैं, weaknesses भी हैं, है ना. कि see, nobody is perfect in this world. That is what we discussed yesterday, right? And you ought to have your self-worth. Self-worth, you value yourself. हम सबको गॉड ने अलग अलग क्वालिटीज दी है ना. हम सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स है तो कुछ वीकनेसेस भी है, एंड दैट इज समथिंग नेचुरल. नोबडी इज परफेक्ट, सो एक्नॉलेज दैट. राइट? देन the fourth point talks about decision making. Now, people with a positive self-image tend to be more assertive and better at making decisions aligned with their values and goals. अब assertiveness हमने क्या पढ़ा था कि putting across your point without making the other person feel offensive या rude.
आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट दूसरे के सामने रख रहे हो, लेकिन आप उनको हर्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे रूडली नहीं बोल रहे हो, लेकिन अपना पॉइंट बहुत क्लैरिटी से आप आगे रख रहे हो. So people with a positive self image tend to be more assertive. Now अगर आपके पास आपकी जो self image है, it is a positive one, है ना, you are confident about yourself, about your self image, so naturally it will help you to be assertive. So you will naturally be assertive in life. आप अपने जो rights हैं, है ना, आप उनके विषय में ठीक से लोगों के सामने अपना अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं. यू कैन पुट अक्रॉस योर थॉट्स, योर पर्सपेक्टिव्स. लेकिन आपकी अगर खुद की ही सेल्फ इमेज, इफ यू आर नॉट having a healthy, a positive self image about yourself, so naturally आपके मन के जो विचार हैं, है ना, आपकी विचारधारा है, आपके जो राइट्स हैं, कई बार लोग आपका फायदा उठाएंगे, क्योंकि आप अपने राइट्स, आप अपने पर्सपेक्टिव्स, पॉइंट ऑफ व्यू आप एफिशिएंटली दूसरे के सामने नहीं रख पाएंगे, इवन इफ यू आर राइट इन लाइफ. ऑलराइट, सो a positive self image helps you in better decision making, which is aligned to your values and goals. Then the last point talks about enhanced creativity. Then a positive self image can foster creativity and innovation by reducing self doubt and fear of failure. Now see, this is a very important point. अब आपके माइंड में अपनी जो सेल्फ इमेज है, it is a positive one. You know, I have certain strengths, I have certain weaknesses, and it is something natural with everybody. I am not the only one. I have my own set of flaws and it is okay. So that means कि आप अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो, है ना. You won't be self doubting yourself all the time, because you know that if I am a human being, I have certain qualities and certain flaws जो हर इंसान में होता है. तो even if I am on a mission, if I am initiating something, और वो अगर आगे वर्कआउट नहीं किया, फेल हो गए हम, तो it is okay. Failures are a part of life. सिर्फ मेरे साथ थोड़ी ना, कई लोगों के साथ होते हैं. At least I should try ना. So सेल्फ इमेज इट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी. अब आपके अंदर अगर ये डर ही नहीं होगा कि व्हाट इफ आई फेल, है ना, तो अगर आप में ये डर ही नहीं है, सेल्फ डाउट ही नहीं है, सो इट विल एक्सपैंड योर क्रिएटिविटी प्रोवेस. ऑलराइट, कि आपकी जो क्रिएटिविटी की क्षमता है वो आगे बढ़ जाएगी. इट इज समथिंग वेरी नेचुरल. वही अगर आप अपने आप को सेल्फ डाउट करोगे, है ना, आप डीमोटिवेटेड रहोगे, आपके अंदर फेलियर का डर रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो क्रिएटिविटी का पावर है, इट विल ऑटोमेटिकली डिमिनिश, वो आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इमेज. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, which talks about the strategies to improve self image. राइट, कि हमने पढ़ा कि सेल्फ इमेज क्या है, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, लेकिन अब इस सेल्फ इमेज को हम एनहांस कैसे करेंगे, हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये हम अब समझेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड. सो द फर्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस इज बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ. ऑलराइट, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, these are my weaknesses, these are my flaws, but this is what I am. You know, you are being aware of yourself. Then self reflection, you're reflecting on yourself. Reflection as in आप अपने बारे में आप चिंतन मनन करते हैं, आप सोचते हैं कि हम कैसे हैं as a human being, what I am. Sorry. So if we look at the example, so we can say that spending some time journaling about your strengths and weaknesses. वही हमने कहा ना, आप चिंतन मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने बारे में कि हम कैसे इंसान हैं. कई बार हम लोग करते हैं ना कि we think what kind of a person I am. So आपको अगर अपनी सेल्फ इमेज एनहांस करनी है, so you should first think about yourself, ponder about yourself कि हम क्या हैं, what I am in front of others, in front of
myself when nobody is around me, and in terms of when I am in front of the strangers. Like there's a Japanese saying, like I read one message, there was one quote that, Japanese people say that like every person has three faces. राइट, कि एक जो सिर्फ हमको पता होता है, एक एक फेस हमारा है जो सिर्फ हमारे जो नोन्स हैं, लाइक आवर फैमिली मेंबर्स एंड आवर क्लोज वंस, आवर क्लोज फ्रेंड्स, दैट दे नो अबाउट अस, एंड एक फेस जो हमारा होता है, दैट इज व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड दे नो अबाउट अस. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. जब तक आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो अच्छे से, यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर क्वालिटीज आर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर फ्रॉम विद इन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी सेल्फ इमेज बहुत एनहांस्ड हो जाएगी, राइट? तो इसकी एक ये स्ट्रैटेजी है कि यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग. लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, इफ यू फील दैट यू आर वेरी लाइक कॉन्शियस, तो आप क्या करो, लाइक और जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, आपका मन है, लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो शाय आउट करते हैं, लाइक दे हेजिटेट. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ वेरी एनहांस्ड सेल्फ इमेज. उनको लगता है कि व्हाट इफ आई फेल, है ना, कि व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड इन दिस. सो इट्स ओके, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड, राइट? कि आप अपने आप के बारे में आप सेल्फ अवेयर हो, है ना, कि हमारी ठीक है, ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ्स हैं, हम अपनी वीकनेसेस पे मेहनत करेंगे तो वो एक ना एक दिन जाके हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, right? So you should think about, you should ponder about yourself. और आप एक कोई जर्नल बनाओ, write about yourself. आप if you are struggling with self image issues, है ना, तो आप अपने बारे में लिखो कि how today you tried talking to people. ये कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं. if you shy, if you think that people will laugh at me, है ना, तो क्या करो, आप अपने आप को छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने लिए. Try going out and speaking to 2 people at least in a day. 2 people say, then you increase that to 5 people. That today in my workplace I will talk to, or in my college I will try talking to at least 5 people. So that is what you are enhancing your communication skills. That will naturally boost your self image. All right. So then the second point is practicing self compassion. Now what is compassion? It is kindness. Treat yourself kindly. We are often very hard and harsh with ourselves, right? हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं, but when we come to ourselves, sometimes we are very harsh, right? कि हमने अगर कोई mistake कर दी, हमको लगता है this is the end of the world. We are such a flaw, we are such a failure in life. But we don't realize that अगर हमने वो गलती करी है, so it is something natural. सिर्फ हम ही तो इकलौते इंसान नहीं है, बहुत लोग गलतियां करते हैं. कल हमने पढ़ा था ना, failures are a stepping stone to success. And the famous quote of Edison, which says कि I have not failed, I have just seen 10,000 ways that don't work. So it's not a big deal. अगर आप गलती कर रहे हो तो आप उससे सीख भी तो रहे हो ना. So try to be kind to yourself. Practice self-compassion, right? So if you make a mistake at work, instead of criticizing yourself, say, I made a mistake, but everyone does. I'll learn from it and do better next time. See, the main thing is that you learn from your mistake. है ना, कि आपने गलती करी, आपने एक्नॉलेज भी किया, लेकिन आपने उससे सीखा नहीं और नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को दोबारा दोहराई नहीं. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना, कि अगर आपने अपने मिस्टेक से ही नहीं सीखा, देन दैट पूरा जो पर्पस है, इट गेट्स डिफीटेड. Alright, so it is okay, to make mistakes, but the bottom line is that you have to learn from them. The only condition here is that you have to learn from your mistakes. Alright, you just don't have to say कि कोई बात नहीं, मैंने गलती कर दी. अरे कर दी है तो उससे सीखो भी ना, and next time you don't have to repeat that mistake. Alright, then the third point talks about limit negative influences. अब negative influences क्या है? See, the people around us, the society around us is a mixture of both sides, positive and negative.
right? Anything you do, like even if you use your phone, it has certain advantages and it has certain disadvantages. ठीक है? तो क्या है कि आप अपने लाइफ में जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, द पीपल अराउंड यू, what you're watching on the TV, what you are scrolling on the phone, try to keep it positive as much as possible. क्योंकि देखिए, अगर आप नेगेटिव, आप अपने इमेज, सेल्फ इमेज को बहुत एनहांस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, दे आर वेरी डीमोटिवेटेड, आपके फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी डीमोटिवेटिंग, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग यू, है ना, दे आर मॉकिंग एट यू, तो आपकी सेल्फ इमेज आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, दैट वुड ऑब्वियसली, इट वुड स्टार्ट डेटीरियोरेटिंग. आप जरा सा 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, किसी ने क्रिटिसाइज किया, यू कम 10 स्टेप्स एट द बैक. So always remember that you should keep people in your life who push you further and not they pull you down. Alright? सिर्फ लोगों की ही बात नहीं है. Like for example, if you are using social media, अब सोशल मीडिया पे इफ यू आर आपने कुछ ऐसे पेजेस लाइक कर दिए which are not very which are not very positive, है ना, they have a negative influence on you, तो क्या होगा, that will naturally it will diminish your self image. पॉजिटिव पेजेस को लाइक करिए, पॉजिटिव पोस्ट देखिए, पॉजिटिव कोट्स पढ़िए, right? So that will naturally boost your self image. So here the example says, if you find that certain social media accounts make you feel inadequate or unhappy, है ना, कि आपको अनहैप्पी कर रहे हैं, आपको आपकी जो क्षमताएं हैं उनको वो डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपको डिग्रेड फील करा रहे हैं. Like there are certain pages ना, कुछ ऐसे quotes होते हैं, they are very negative, so you should avoid such. Alright, then you should unfollow or mute them to reduce the negative impact on your self image, and you should ignore the negative people as well, कि जो जिनका भी कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है आपकी लाइफ में, you know that this person is always pushing me down rather than motivating me. By motivation भी कभी कभी leave it aside, they are not even appreciation तो छोड़ो, they are criticizing me. At times being neutral, being quiet is much better, है ना. आप देखो कि ठीक है, कोई इंसान है, he doesn't speak anything, na positive na negative, that is still better rather than somebody who's always criticizing you, always being negative in life. All right, then sorry, I just zoomed it. Yeah, the next strategy is setting realistic goals. Now see, this is something very important. हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी. See, these are some strategies that you would be sharing in every concept. We talk about setting realistic goals. अब आपकी सेल्फ इमेज चलिए पॉजिटिव हो गई, यू आर हाई ऑन मोटिवेशन, हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, लेकिन आपने जो गोल्स हैं, इतना ज्यादा आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यू सेट गोल्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल, राइट. आपने ऑल ऑफ अ सडन अपने इमोशंस में बहके यू मेड अ वेरी अनरियलिस्टिक गोल. क्या होगा, अगेन द प्रॉब्लम विल कम. जब आप उस लेवल को हासिल नहीं कर पाओगे, you will again get demotivated in life. All right, so the example says, suppose if you're learning a new skill or a new language, set achievable milestones along the way and celebrate your progress after reaching each one. Like for example, if someone wants to become an actor, अगर किसी को एक्टिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, राइट, अब that acting is my passion, I want to pursue this field. All right, so you have to make realistic goals. You cannot say ki all of a sudden that I will be the next superstar in 5 months. That is something not possible. You have to work hard. आपको पता है, if you are interested, so much passionate about the acting field, आप क्या करोगे, आप पहले छोटे लेवल से, you will make small goals. तो आपका फर्स्ट गोल होगा कि ठीक है, I will start with theater.
आई विल बी अ पार्ट ऑफ अ थिएटर क्लब, है ना, आप लाइक यू नो कई कई शहरों में दे वेरी नाइस थिएटर क्लब्स, आप उसका एक पार्ट बन जाओ, है ना, प्लेस में काम करो, प्लेस से ठीक है, फिर उससे थोड़ा नेक्स्ट गोल बनाए कि चलो नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सम डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स। तो मेक स्मॉल गोल्स, तो आपका अगला गोल ये हो जाएगा दैट नाउ आई विल ट्राई माई हैंड एट डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स, फिर उससे एडवर्टिजमेंट्स में, एंड देन यू अप्लाई एट द हाईएस्ट लेवल एंड इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो इन विच एवर फील्ड यू आर, आप जिस भी एरिया में हैं, always remember that you have to start from the bottom line, क्योंकि आज जो लोग they are at the peak of their success, be it in the technical world, be it in the film industry, be it in the academic field, everywhere people have started from the bottom line. कहते नहीं, you have to start from the scratch. होता है ओवरनाइट, अगर आपको सक्सेस मिल जाए, इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, राइट, लेकिन वही जब आप मेहनत करते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट, यू मेक स्मॉल गोल्स, यू अचीव दोज गोल्स, है ना। कभी कभी फेलियर्स का भी सामना करेंगे, डिमोटिवेशन थोड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, यू नीड टू नो कि मेरा गोल क्या है, आई हैव टू वर्क हार्ड डिस्पाइट माई फेलियर्स, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू अचीव माई गोल। ऑलराइट, so always remember to set realistic goals in life and not unrealistic goals. Now, then the fifth point talks about embracing your uniqueness. Now, see, this is also very important. Like you can see in this photograph, how this, wait, yeah, how this girl is. She's like, she's wearing a baggy t-shirt, she's a little plump, little healthy, standing in front of the mirror, but हम इसको देख के क्या महसूस कर पा रहे हैं कि she's very confident, she's accepting the way she is. She's not caring ki, I'm not slim, I'm not very stylized, I'm just wearing an ordinary shirt and a pant, I'm so healthy. So how, it doesn't matter, right? Because each one of us is gifted with some quality, certain set of qualities, है ना। आप सब जितने भी अभी ये क्लास कर रहे होंगे, just it is your homework today, I'm just giving you one homework, that today just try to write 10 positive points about yourself. How, write how unique I am. The title would be, what is my uniqueness, and write 10 points about yourself. And when you would write them, you yourself would feel so good about yourself, so happy, so positive. तभी तो ये पेपर आपके सिलेबस में ऐड हुआ है ना। इट सेज वैल्यू एडेड कोर्स, क्यों नहीं कोई और शब्द इसमें यूज हुआ? बिकॉज इट इज एडिंग अ सर्टेन वैल्यू टू योर लाइफ, right? Like yesterday we talked about self confidence, today we are talking about self image. Now these are something very important to help you progress in life, help you reach your goals in life, instill positivity in your life, right? तो you should be very grateful, you should be very happy कि आपकी यूनिवर्सिटी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है टू ऐड दिस वैल्यू एडेड कोर्स। सी, बिकॉज हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि आपके जो नॉर्मल सिलेबस में आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी थ्योरीज हैं, एवरीथिंग ओके, दैट इज योर एकेडमिक्स, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर कॉन्सेप्ट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, सेल्फ इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स they have been added as a part of your syllabus to help you grow in life. Practical world से deal करना is something difficult. It's not an easy thing, right? So आप जब ये strategies अपनाएंगे अपने जीवन में, आप इन चीजों को समझेंगे, ये strategies follow करेंगे, you yourself will see that change in yourself. You'll start feeling positive about yourself. All right, so always embrace your uniqueness. Realize कि हम सब, each and every person living on this earth right now have their own uniqueness.
राइट. सो यू नीड टू जस्ट डिस्कवर दैट. आपका होमवर्क बस ये है कि आपको बस डिस्कवर करना है कि हम कैसे अलग हैं दूसरे से. कोई एक बहुत अच्छा पोएट हो सकता है, कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है. सबके अलग अलग यूनिक क्वालिटीज हैं. So you should always be grateful to God about your unique qualities. Appreciate them, you know. And moreover, the biggest blessing in life is to be born as a human and to have a proper body. हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं जीवन में ये सोच के कि हमारे पास ये तो है ही नहीं, ये चीज़ नहीं है, वो देखो उसको, उसके पास कितनी खुशियाँ हैं, उसके पास ये है वो है. ठीक है, लेकिन डोंट यू एवर रियलाइज कि हमारे पास एक प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी है जो कई लोगों के पास नहीं होती है. So many people are born without eyes, without limbs, hands, legs. They cannot hear. कितनी कितनी बीमारियां आए हैं आजकल जीवन में. People are suffering from that. There are some people who wish for death in life कि इतना पेन होता है. बीमारियां such as cancer. आपको एक जीवन मिला है. You're blessed with the biggest gift of life. So you should always be grateful for that. You should always feel positive that I am so much better than many of the people in this world. आज आप इस लायक हैं कि आप ये ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं. So many people right now जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं, उनको ये ब्लेसिंग नहीं मिली है. There are so many children out there who want to study, लेकिन just because of many issues such as financial issues, है ना, कि घर पे इतना हम financially strong नहीं कि हम पढ़ाई कर पाए. So many people, they want to live the life that you have, and some people out there, they wish कि हम दूसरे की तरह हो जाए, है ना. So we don't realize that what are the blessings that we have in life. So always you have to embrace your uniqueness. All right, always try to think about the positives in your life. If you think about the negative, you will pull yourself down. आप उस नेगेटिविटी में ही रहेंगे and it will hamper your success. आप जो भी करेंगे, it will have negativity. But if you have a positive outlook in life, that will naturally help you to succeed, to achieve your goals. All right? Then, तो ये थी हमारी कुछ strategies जो हमने पढ़ ली. Now, I just wanted to share some interesting facts with you, So these statistics and facts have been taken from World Count website, and क्योंकि हमारा topic है self image, and also इससे related I found these very interesting, right? So we'll just go through them one by one. पहला है that one study conducted a test on women. एक टेस्ट हुआ, ठीक है, women पे एक टेस्ट हुआ, तो रेशियो क्या था कि 3 out of 4, मतलब 4 में से 3 जो women थी उन्होंने कहा कि we are overweight. ठीक है, मान लो 4 women को अगर टेस्ट दिया तो उनमें से 3 लोगों ने कहा कि I am very overweight, but in reality it was only one of them that was overweight. So see how self image, इन लोगों का कितना distorted होगा. उनको लग रहा है कि आई एम ओवरवेट, मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन इन रियलिटी शायद उनमें से 4 में से सिर्फ एक ही इंसान है, लेकिन 3 लोगों को लग रहा है कि भाई हम मोटे हैं, है ना. सो दिस इज योर सेल्फ इमेज, कि आपका कितना डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज है, दैट यू आर नॉट हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज अबाउट योरसेल्फ. आपको लग रहा है दैट आई एम शेपलेस, आई एम ओवरवेट, राइट. देन and the second point talks about, after viewing images of fashion models, 7 out of 10 women felt more depressed and angrier than before. There was a study जिसमें they were shown pictures of fashion models, and उनमें से देखा गया कि 10, like ratio ये था कि if there were 10 women, तो 10 में से 7 women they started feeling angrier, और वो और depressed हो गई. हमने कई बार होता है ना कि if we
न्यूज़पेपर में ब्यूटीफुल फेसेस आए, तो हम लोग क्या करें, उनको देख के वी सी दैट आई विश आई वाज आल्सो ब्यूटीफुल. वी डोंट रियलाइज दैट दे आर एडिटेड पिक्चर्स या फिल्टर्ड पिक्चर्स. कितनी मेहनत होती है. लाइक देयर इज अ सर्टेन आईटी टीम व्हिच वर्क्स ऑन देयर फीचर्स, है ना. अब तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई रेड कि लाइक दे आर सोन सेइंग कि ये जो फेसेस हैं, लाइक जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आते हैं, फॉर ज्वेलरी, फॉर मेकअप एंड एवरीथिंग, वो उसके लिए दी AI, the artificial intelligence will now be creating those faces. So isn't it something so interesting कि जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, they'll just create a face which is not in reality existing in this world. So aren't we living in a in such a myth? एक myth में हम लोग रहते हैं, एक एक false perception में हम लोग रहते हैं, and that false perception, it affects our self image. तो मेन जो उद्देश्य है ये समझाना है कि भाई हम जैसे हैं, आई एम सेल्फ अवेयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम सेटिस्फाइड. हम जैसे हैं हम ऐसे ही हैं. हमारे में अगर कोई फ्लॉज हैं, ठीक है, हम उस पर काम करेंगे और एक दिन हम उनको अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे, है ना. वी डोंट हैव टू बी डिप्रेस्ड इन लाइफ कि अगर हमने कुछ अचीव नहीं कर पाया या हमसे कोई अगर बेहतर है किसी चीज में, कोई बात नहीं, दैट इज हिज और हर पोटेंशियल. हम भी मेहनत करेंगे, हम अपने एरिया में निखर के आएंगे. Alright, then the third point that I took was the anorexia nervosa, an eating disorder. जो psychology students होंगे उन्होंने पढ़ा होगा ये, that it is an eating disorder, ठीक है, characterized by intense fear of gaining weight, leading to restrictive eating and a distorted body image, has the highest mortality rate of all psychiatric illness. And this study was done by Auger in 2021. देखिए, कुछ भी आप पढ़ते हैं ना, अगर आपको मन करे तो उसको डिटेल में जाके जस्ट सर्व द नेट, डिटेल में जाके पढ़िए, सो यू विल डेवलप मोर इंटरेस्ट इन दैट. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा, लाइक इजी टर्म्स में समझाना चाहिए, सो इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें इंसान क्या है कि वो खाता पीता ज्यादा नहीं है, बिकॉज उसके माइंड में एक डिस्टॉर्टेड इमेज होती है अपनी कि आई एम अ शेपलेस पर्सन, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, आई एम नॉट ब्यूटिफुल. तो हम क्या करेंगे, हम खाना कम खाएंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे. उससे क्या होता है, उससे उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं. भाई ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर नॉट ईटिंग, आपकी नरिशमेंट में तो अफेक्ट होगा ना. यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स. क्या होगा, योर बॉडी विल स्टार्ट डिसफंक्शनिंग. तो दे कंडक्टेड दिस स्टडी ऑगो, एंड दे फाउंड कि जो अभी रिसेंटली जो हाईएस्ट मोर्टालिटी, जो सबसे ज्यादा भी डेथ हो रही है साइकेट्रिक इलनेस में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा. सो इजंट दिस समथिंग सो सिली कि आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्स परसेप्शन, जो आपका नेगेटिव बॉडी इमेज है आपके बारे में, जो दूसरे कह भी नहीं रहे हैं, बस आपने अपनी एक विचारधारा बना ली अपने बारे में कि हम ऐसे हैं, हम शेपलेस हैं, आई एम नॉट ब्यूटिफुल. उसकी वजह से आप अपने आप को ही प्रताड़ित कर रहे हैं. यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ. और फिर क्या कर रहे हैं, उसी में आप अपनी जान गवा बैठ रहे हैं. So isn't this something so meaningless? It is so silly कि आप खुद ही अपने दिमाग में false image अपनी बना रहे हैं और उसी पे ही आप अपने आप को टॉर्चर करके मार ले रहे हैं. So this is something that you should never do in life. Life is a biggest blessing. You should know that whatever I'm given with, whatever I'm blessed with, that is what I have. I should be thankful for it and I should work upon it. Okay. And the last point says that today's media greatly influence the self-image of teenagers. They are told that their value is related to how thin or muscular they are. Now, this is something very natural. है ना, आज के इतने टीवी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ऑन योर सोशल मीडिया, एवरीवेयर दे पोर्ट्रे दैट if you are slim, then you are very beautiful. If you have sharp features, then you are very beautiful. In terms of voice, if you are very muscular, है ना, तो you look attractive. तो इसके लिए अब वो क्यों कर रहे हैं भाई, उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, है ना, उनको अपना वो प्रोटीन का जो पाउडर्स होते हैं
है ना, उनके अपने जो यू नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर वुमेन, है ना, उनको वो सब सेल करने हैं, तो नेचुरली दे शो फॉल्स इमेजेस, वो कोई रियल भी नहीं होते हैं एट टाइम्स, यू नो, दे जस्ट हाईली एडिट दोज पिक्चर्स एंड देन दे अपलोड इट एंड देन दे शो दैट फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। कई बार आपने एक चैनल काफी पहले आता था, टेली समथिंग था, टेली कम्युनिकेट, आई लाइक आई एम जस्ट यू नो इट इज जस्ट स्लिपिंग ऑफ माय माइंड, देयर वाज दिस चैनल, तो उसमें यू नो दे यूज्ड टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स इन सच अ यू नो एंटाइसिंग मैनर कि एक ही महीने में आप ये लीजिए और ऐसे हो जाएंगे, आप बिल्कुल पतले हो जाएंगे, यू नो यू जस्ट लूज 20 kgs एंड यू नो सच फेक स्टफ दे हैव, एंड यू नो इट डजंट वर्क। बट क्या होता है, ये हमारे माइंड में, क्योंकि हमारे माइंड में हमारी इतनी नेगेटिव इमेज है हमारी, कि हमको लगता है कि जो भी मिल जाए, आई विल बाय दैट एंड आई विल बिकम ब्यूटिफुल, यू नो। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड इन लाइफ। जैसे हैं, इफ यू थिंक कि ठीक है, इफ आई एम वेरी ओवरवेट, तो ठीक है, मुझे उस पर थोड़ा काम करना होगा। ये थोड़ी ना कि यू विल स्टार्ट यू नो टॉर्चरिंग योरसेल्फ दैट आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट क्लिक माय पिक्चर्स बिकॉज आई लुक टेरिबल, यू नो, आई विल नॉट गो आउट। व्हाई? इट इज समथिंग नेचुरल। सिर्फ आप ही तो ओवरवेट नहीं हो ना, और भी बहुत लोग हैं। ठीक है, उस पर मेहनत करिए थोड़ा थोड़ा, यू नो, जो जैसे हमने बात करी, मेक स्मॉल गोल्स, है ना, छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि एक महीने का मेरा डाइटरी प्लान जो है, यू नो, टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स, है ना, कि प्रोफेशनल्स आपको जो मान लो जिम ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी अगर ये एक्सरसाइजेस है तो आपके ये डाइटरी प्लान, तो उससे क्या है कि आपको प्रॉपर नरिशमेंट भी मिल रही है ना, योर बॉडी इज गेटिंग द sufficient amount of carbohydrates, proteins, fats, everything, and उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो गोल है आप उसको भी अचीव कर रहे हैं। नॉट लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि आप अपने आप को बस टॉर्चर करें कि मैं खाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, एंड अल्टीमेटली यू डाई, and that doesn't make any sense, right? It is something very silly, right? So never ever, please, it's my humble request, being especially if you are you know from the field of psychology, you at least relate yourself, right? कि हमको जो भी हमको you know in that false image जो दिखता है, you know, टीवी पे दिखता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, everywhere what we see, it is not always real, always you know, all right, तो कभी कभी they are fake stuff, but we get so motivated, तो हमको लगता है कि हमको भी exactly ऐसा होना है, हम उसके लिए हर चीज कर, नो, अंडरस्टैंड, बी सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि ठीक है, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे भी हैं, आई विल वर्क स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा गोल सेट करेंगे, आई विल यू नो वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड आई विल अचीव माई गोल। सो लाइक देयर वाज दिस कोट जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। लाइक दिस कोट सेज, योर स्माइल इज योर लोगो, राइट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, योर स्माइल इज योर लोगो, योर पर्सनैलिटी इज योर बिजनेस कार्ड, एंड द वे you make others feel is your trademark. Like whoever has written it, I just found it very wonderful, so I thought of sharing, क्योंकि हम लोग सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं, so I wanted to share this, कि आपकी जो स्माइल है, स्माइल represents what, your positivity, so it's your logo. If you smile, if you stay happy, the people will know you that you know she is a very, or he is a very positive person, and they will naturally be you know always around you, they will always help you, है ना। योर पर्सनैलिटी इज योर बिजनेस कार्ड, है ना। बिजनेस कार्ड क्या होता है कि व्हेन यू गिव योर बिजनेस कार्ड, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग रिलेशंस विद द अदर पर्सन, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को इंडोर्स कर रहे हो, है ना, कि ये हमारा बिजनेस कार्ड है, आप हमारे आइएगा, है ना, आप हमारे शॉप पे आइएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर इंडोर्सिंग योरसेल्फ, तो द वे योर पर्सनैलिटी इज, ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, you are endorsing yourself in the society, in the world, कि I am this, you're representing what you are, है ना। So always try to have a positive personality, a pleasing personality, है ना। अगर आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नेगेटिव होंगे, you know, they will not be positive, तो क्या होगा,
ऐसे कोई आपको बिजनेस में, आप किसी शॉप पे जाओ, है ना, आप किसी शॉप पे जाओ, द शॉपकीपर इज वेरी रूड, है ना, कि दैट पर्सन डजंट ट्रीट यू वेल, है ना, वो आपसे बात भी ना करे, है ना, आप कहे कि ये दिखाइए तो आपको इग्नोर कर दे, है ना, या कहे कि अभी रुक जाइए, है ना, टॉकिंग वेरी वेरी रूडली, आप क्या करोगे, आप दोबारा जाओगे उसके शॉप पे? नहीं जाओगे। आप क्या, मैं भी नहीं जाऊंगी। नो, नन ऑफ अस लाइक रूड पीपल, है ना। सो योर पर्सनैलिटी इज योर बिजनेस कार्ड. If you want people to approach you, if you want to do well in your professional area, आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रोच करें, है ना, कि यू हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग, you have a lot of people who are there for you, who stand by you. So obviously you have to have a good positive personality. All right, and the way you make others feel is your trademark. Trademark होता है ना, every product has a trademark. So the way you make others feel is your trademark. लोग कभी नहीं भूलते हैं कि आपने उनको कैसा महसूस कराया है. राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिससे भी, चाहे वो 1 मिनट की बात क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आप अच्छे से करें, है ना, कि ऑलवेज बी गुड टू पीपल एंड द पीपल विल बी गुड टू यू. राइट, एंड जहां, हाँ, ये भी है कि इफ यू फील दैट समबडी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, तो वहां पे यू हैव टू शो व्हाट, assertiveness. हमने पढ़ा था ना, assertiveness. Assertiveness is putting across your point, your perspective without making the other person feel rude. है ना, आपने अपनी बात बोल दी है, क्लैरिफाई कर दिया, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर कर दिया किसी, दीज आर माई बाउंड्रीज एंड आई वुड नेवर लाइक दैट समबडी एंक्रोच दैट. आपने अपनी बाउंड्रीज को क्लैरिफाई कर दिया, यू आर पुटिंग योर पॉइंट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन. ऑलराइट, लेकिन अब आप उनको रूडली नहीं, बट यू आर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग. ऑलराइट, so we'll just have a quick recap of what we learned today. Alright, we learned about the meaning of self image, कि self image हमारे self concept और self esteem का एक product है ना, कि how we view ourselves in terms of our abilities, हमारी क्या abilities है, क्षमताएं हैं, हमारी क्या personality है, हमारी कैसी appearance है, हम society में कैसे हैं, how we are in terms of social rules. राइट, सो इट टॉक्स अबाउट दैट. सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसके दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, दो भाग हैं इसके. सेल्फ इमेज के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और वो क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम. सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे डोमेन्स हैं, है ना, कि इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ, हमारी क्या अलग अलग डोमेन्स हैं. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एज अ फ्रेंड कैसे हैं, हम एज अ डॉटर कैसे हैं, है ना, हम एज अ कोलीग कैसे हैं. तो ये हमारे क्या, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है. एंड सेल्फ एस्टीम इज कि हम अपने आप को इसमें कितना आंकते हैं, हाउ मच वी इवैल्यूएट आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि वेदर आई एम अ गुड फ्रेंड, है ना. अगर हमको लगता है कि आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, तो हमारा क्या, हाई सेल्फ एस्टीम होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, कि हम अच्छे दोस्त हैं, है ना, कि वेदर आई हैव बीन अ गुड डॉटर, है ना, तो इफ आई हैव नॉट बीन अ गुड डॉटर, हमारा लो सेल्फ एस्टीम होगा इन टर्म्स ऑफ माय रोल एज अ डॉटर. ऑलराइट, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे कंपोनेंट्स हुए ऑफ सेल्फ इमेज. देन कमिंग टू द 6 डायमेंशंस ऑफ अ पर्सन सेल्फ इमेज. अब हमारे 6 डायमेंशंस क्या थे, किसने दिए थे, ओल्टमैन इन 2014. तो हमारे डायमेंशंस क्या है, फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारे क्या अपीयरेंस है ना, कि हम अपने अपीयरेंस को कैसे आंकते हैं, हाउ वी इवैल्यूएट आवर अपीयरेंस, है ना, whether we are confident about our looks, about our appearance, the way we carry ourselves, or we are not confident. Then psychological dimension talks about how we evaluate our personality, कि हम बड़े सोशल हैं, कि हम बड़े थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, कि एम्बीवर्ट हैं, कि हम मतलब दोनों ही हैं भाई, हम एक्सट्रोवर्ट भी हैं, हम इंट्रोवर्ट भी हैं, है ना, based on the situation. Then the third point talks about intellectual dimension, that how a person evaluates his or her intelligence, कि हम कितना सोचते हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं,
राइट. देन स्किल्स डायमेंशन, कि हमें पता है कि हम कितने स्किल्ड हैं और हमें अपनी कितनी अभी स्किल्स पे मेहनत करनी है, या हमारी कितनी मास्टरी है, या अभी हमें कितनी और मेहनत करनी है. ठीक है. तो योर स्किल डायमेंशन शोज कि हमने अपने जो स्किल्स हैं, जो हमने सीखे हैं, उस पर हमने कितनी मास्टरी करी है. देन द मॉरल डायमेंशन टॉक्स अबाउट कि हम कितने मॉरल इंसान हैं, whether I am a person who has moral values or I don't have moral values. All right. Then sexual dimension कि whether I fit into the role of the feminine norms, है ना, norms होते हैं ना हमारी सोसाइटी में regarding the genders, तो हम कितना उसको fit करते हैं. All right. Then coming to the recap of importance of self image, हमने पढ़ा कि ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा होता है. इट्स समथिंग नेचुरल. आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगी, यू विल बी हैप्पी, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, है ना. देन कि हम मोटिवेटेड रहेंगे और हमें सक्सेस हासिल होगी, हमें जीवन में विजय हासिल होगी, क्योंकि हमारी जो सेल्फ इमेज है हमारे बारे में, इट्स पॉजिटिव. देन हमारे जो रिश्ते होंगे दूसरों से, वो बेहतर होंगे. अगर हम खुद को ही अपने आप को नेगेटिवली देखते हैं, तो हाउ कैन वी फॉर्म पॉजिटिव रिलेशंस विद द अदर्स, है ना. देन डिसीजन मेकिंग, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी सेल्फ इमेज अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, वी विल बी मोर एफिशिएंट इन बेटर डिसीजन मेकिंग, है ना, जो हमारी वैल्यूज और गोल से अलाइंड होगी. देन एनहांस क्रिएटिविटी, है ना. अगर हम अपने आप को डाउट ही करते रहेंगे, हमें हमारे अंदर डर रहेगा फेलियर का, तो हमारे जो क्रिएटिविटी का चैनल है, इट गेट्स ब्लॉक्ड, राइट, कि हम क्रिएटिवली सोच ही नहीं पाएंगे. सो द गोल इज टू ऑलवेज हैव अ बेटर सेल्फ इमेज. और उसकी स्ट्रैटेजीज हमने देखी कि हमारी वी शुड बी सेल्फ अवेयर, वी शुड सेल्फ रिस्पेक्ट. और आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप अपने आप के बारे में 10 यूनिक पॉइंट्स आप लिखेंगे, राइट. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक इफ यू वुड शेयर इट ऑन द कमेंट्स, और वेदर इन द क्लास. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड लाइक कि आप लोग शेयर करो. इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग ना, कि हर बच्चा अलग अलग अपने यूनिक टैलेंट्स के बारे में बता रहा है. तो उससे क्या होगा कि हम लोग को क्लास में भी पता चलेगा कि अच्छा, कि ये बच्चा शी इज सच अ वंडरफुल पोएट, इसने कितने कितने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं. एक बच्चा बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, हम कहेंगे कि आप चलो अपने पेंटिंग्स ला के दिखाओ. So isn't that wonderful? We can have a class on that, one day. Then you have to be kind towards yourself. See, please, it's my humble request, children, always be kind to yourself. गलतियां सबसे होती हैं, but we should know कि गलतियां are a part of life. हमको अपने आप को काइंडली ट्रीट करना है. क्यों? क्योंकि हमको अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखना है और उसको आगे लाइफ में नहीं दोहराना है. ऑलराइट. देन we have to limit the negative influences. जो भी हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया है, उसको क्या करना है? ब्लॉक करना है, म्यूट कर देना है, अनफॉलो कर देना है. ऑलराइट. देन सेट रियलिस्टिक गोल्स. हमें अपने गोल्स छोटे छोटे बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, बट प्रैक्टिकल गोल्स, नॉट अनरियलिस्टिक, है ना. अनरियलिस्टिक होगा, you will not be able to achieve them and you will get demotivated. And then embracing your uniqueness, that you have to know कि हम जैसे भी हैं, I am unique in this world. Then we talked about the statistics and facts, and finally this quote. So thank you so much, students, for all right. If anybody has any question, please let me know. Thank you so much, everyone, for joining this class. All right, it was wonderful, sharing an important concept such as self-image with you all. All right. So, and we hope to see you all on Monday. All right. The timing, and the thumbnail would be shared shortly. And we would appreciate कि आप लोग इस value added course की classes आप करें, because see, this is something that is adding value to your life. ठीक है, value added. It is adding value to your life. All right. So thank you so much, everyone, and hoping to see you all in the next class with again an interesting concept from our first module. Have a great day, students.